हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग समस्त गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास रे आम जनरल इनफॉरमेशन अधा पढ़ते। ओके, ये क्लास रे आम आउ किसी जनरल इनफॉरमेशन जनरल नॉलेज को कंप्लीट करवा। तो चलो देरी न करके स्टार्ट करवा क्लास। ओके, जो मैंने बुझी न पार्छ से कमेंट रे जणै परिबो, बुझिला से कमेंट रे जणै परिबो आ कौन कौन क्लास नेक्स्ट को करा जिवो, बुझिला से माने भी सब कहि परिबो, बुझिला कौन कौन क्लास नेक्स्ट को करबा को चाहजो से सब कमेंट रे जणैबो, बुझिला। ओके, स्टार्ट करवा क्वेश्चन। आ जहाँ जहाँ डाउट रोज कमेंट रे भी जो लिखि परिबो आ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो। ओके, तो चलो स्टार्ट करिया। In which year Sambalpur and Berhampur University were founded? In which year Sambalpur and Berhampur University were founded? In 1967. Okay. In the year 1967, Sambalpur and Berhampur University were founded. Okay, next question. For the first time, which commission recognized secondary education day colonial era of both vocational and academic education? Which one? Hunter Commission. बुझला, Hunter Commission. For the first time, Hunter Commission recognized for secondary education day the colonial era for both vocational and academic education. Okay, next question. In which year Hunter Commission was concerned with secondary education? In which year? 1982. Okay, in the year 1982, Hunter Commission was concerned with secondary education. Okay, next question. Which commission brought secondary education under the ambit of university? Which commission? Gokhale Commission. बुझला, Gokhale Commission brought secondary education under the ambit of the university. Okay. Next question देखिए. What is the popular name of University Education Commission in early 20th century? What is the popular name of University Education Commission in early 20th century? Gokhale Commission. Okay, ताको Gokhale Commission कहा जाए. What is the popular name of University Education Commission in early 20th century? Early 20th century रे को education टा popular थिला, को commission टा Gokhale Commission. Okay, next question. In which year University Education Commission submitted its report? को वर्ष University Education Commission ता report submit कर थिला, को वर्ष 2002 रे, बुझिला 2002 रे University Education Commission submitted its report. Okay, next question. In which year Kolkata University Education functioned? In which year Kolkata University Education functioned? कोई वर्ष 1917. Okay, 1917 year रे Kolkata University Education functioned. Next 2007 रे 7 ना 8 रे, अच्छा सेटा 9 नहीं थिला. ओके, अच्छा who was the chairman of Kolkata University Commission? Who was the chairman of Kolkata University Commission? Michael Sadler. Michael Sadler was the chairman of Kolkata University Commission. Which commission, while examining the status of secondary education, recommended the establishment of intermediate college during the colonial era? Which commission? Sadler Commission. बुझला, Sadler Commission while examining the status of secondary education recommended the establishment of intermediate college during colonial era. Okay, which British Act recommended education to become a provincial subject? Which British Act recommended education to become a
provincial subject कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्ट recommended education to become a provincial subject. Okay, next question. Which committee recommended abolition of intermediate college to make secondary education 6-year tenure? Which committee recommended? को committee? Sapur committee बुझेला. Sapur committee recommended abolition to intermediate college to make secondary education 6-year tenure. बुझेला. Sapur committee recommended abolition of intermediate college to make secondary education 6-year tenure. Next question देखिए. In which year Sapur committee submitted its report on secondary education? कोई वर्ष? On the year 1934. बुझेला. 1934 रे Sapur committee तार रिपोर्ट सबमिट करथिला. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CABE? CABE रो फुल नेम कोन? एटा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन. बुझिला. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन. In which year CABE held its first meeting? CABE तार फर्स्ट मीटिंग केबे करथिला? केबे? 1935 रे. ओके 1935 रे CABE तार फर्स्ट मीटिंग करथिला. Who recommended a revised school organization with a primary stage of 4 years, a lower secondary of 4 years and higher secondary of 3 years? Who recommended the revised school organization with primary stage of 4 years, lower secondary stage of 4 years and higher secondary is 3 years? किए कहतिला एटा? किए कहतिला? CABE कहतिला. बुझिला. CABE ता रिपोर्ट रे कोन कहतिला? प्राइमरी स्टेज टा 4 year होबा, लोअर सेकेंडरी टा 4 year और हायर सेकेंडरी टा 3 year. बुझिला. How do we remember contribution of Wood and Abbott? How do we remember contributions of Wood and Abbott? Suggestion: completing hierarchically of vocational institution running parallel with general educational institution of polytechnics, institution of agricultural high schools. All of these could have all of these. Okay, next question. In which year Wood and Abbott recommendation came? को वर्ष Wood and Abbott recommendation आस्तिला? को वर्ष? 1937. In the year 1937 Wood and Abbott recommendation came. Which committee endorsed Wood and Abbott report? Which committee endorsed? Wardha committee. बुझेला. Wardha committee endorsed Wood and Abbott report. Next question. Which committee considered pre-collegiate education is terms of basic schools? Which committee considered pre-collegiate education is terms of basic schools? किए करथिला? वार्धा कमिटी. बुझिगला. व्हिच कमिटी पचारिस ना? वार्धा कमिटी. वार्धा कमिटी considered pre-collegiate education in terms of basic school. Okay, next question. Who is known for report on post-war education in India? Who is known for report on post-war education? Post-war education ऊपर किए रिपोर्ट करथिला? ये सर जॉन सर्जेंट. बुझिला. सर जॉन सर्जेंट known for report on post-war education. Sir John Sargent known for report on post-war education in India. Okay, next question. Which one report recommended in 1948 the pre-collegiate education for 12 years? Who one report
recommended in 1948 the pre-collegiate education for 12 year किए करथिला बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बुझेला बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन report recommended in 1948 the pre-collegiate education for 12 years. Okay, next question. Who headed University Education Commission in 1948? 1948 रे University Education Commission किए हेड करथिला एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन बुझेला सर्वपल्ली राधाकृष्णन हेडेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन. Okay, next question. Which body observed our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reforms? Which body observes our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reforms? Okay. University Education Commission observed our secondary education remain the weakest link in our educational machinery needs urgent reforms. Okay, next question. In which year secondary education commission was constituted? Which year? 1952. In the year 1952 secondary education commission was constituted. Okay, how is secondary education commission popularly known? Secondary education commission केमिति popularly known? का द्वारा मुदालियर कमिशन बुझिला मुदालियर कमिशन ना रे. ओके, secondary education commission is popularly known by Mudaliar commission. Okay, what was the major recommendation of secondary education commission in 1952? 1952 रे secondary education commission रो major recommendation कौन थिला? Secondary education after 4-5 years of primary junior basic education बुझिला. secondary education केते बेला हबो? after 4-5 year of primary education. एटा किए देथिला recommendation? secondary education commission देथिला 1952. okay, next question देखिबा. who recommended 12 year schooling to be followed by 3-year degree course? 12 year schooling to be followed by 3-year degree course बोल किए कहथिला? Conference of Vice Chancellor 1962, All India Council of Secondary Education 1963, Conference of State Education Minister 1964. किए कहथिले? All of these समस्त कहथिले बुझिला समस्त विषय कहथिले. Recommended कौन करथिले? 12 year schooling to be followed by 3 years degree course. Okay, next question देखिबा. who observed that secondary education must prepare a student for the university or prepare a student for some vocation in life? Who observed that secondary education must prepare a student for the university or prepare a student for some vocation in life? किए observe करथिला? कोठारी कमिशन बुझिला. Kothari Commission observed that secondary education must prepare a student for the university or prepare a student for some vocation in life. Okay, next question देखिए. Kothari Commission 1964-66 recommended what? Broadly uniform pattern of education extensions in the total period of schooling to bring about a general rise in the standard of attainment, vocationalization of education. All of these. Okay, all of these. Kothari Commission all of these होगा. बुझे. next question देखिए. based on Kothari Commission report, what was the action of Government of India? Kothari Commission report on जाई Government of India action कौन थिला? made a national policy statement.
ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट तैयार करथिला इन 1968 रे बुझला बेस्ड ऑन कोठारी कमिशन रिपोर्ट गवर्नमेंट कौन एक्शन नहीं मेड ए नेशनल पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1968 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु अडॉप्टेड 10+2+3 पैटर्न इन 1972 conference of education secretaries and directors okay who adopted 10+2+3 pattern in 1972 conference of education secretaries and directors okay conference of education secretary and directors adopted 10+2+3 pattern in 1972 okay which national committee was asked to suggest partial step on 10+2+3 pattern which national committee was asked to suggest partial step on 10+2+3 pattern किए करथिला डॉक्टर पी.डी. शुक्ला बुझला डॉक्टर पी.डी. शुक्ला was asked to suggest practical steps on 10+2+3 pattern okay who said teacher is the best server to the nation who said that teacher is the best server to nation बोली किए कहथिला मालविया M.M. मालविया okay M.M. मालविया said that teacher is the best server to the nation who said teacher never retires and always continues to endeavor to teach the new generation किए कहथिले एटा नरेंद्र मोदी बुझला टीचर नेभर रिटायर्स टीचर के रिटायर हुए एंड ऑलवेज कंटिन्यूज टू एंडियोवर टू टीच द न्यू जेनेरेशन को टीच करने सदा बेले आगभर रही है इन व्हिच ईयर पद्मा अवार्ड्स वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 okay Padma award is instituted in the year 1954 who received the Bharat Ratna in 2014 किए नहीं थे तेंदुलकर okay Tendulkar received the Bharat Ratna in 2014 okay who founded Banaras University किए फाउंड करते M.M. मालविया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी M.M. मालविया फाउंड करते बुझला where Madan Mohan Malviya University National Mission on Teachers and Training was launched where कोड लॉन्च होता वाराणसी रे बुझला वाराणसी रे मदन मोहन मालविया नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड ट्रेनिंग वाज लॉन्च्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेम द नॉन इंडियंस हु रिसीव्ड भारत रत्न एमान भीतर किए नॉन इंडियन जड़े भारत रत्न रिसीव करथिले खान अब्दुल गफर खान मदर टेरेसा नेल्सन मंडेला समस्ते बुझला समस्ते हो समस्ते नहीं भारत रत्न ओके हु डिक्लाइंड भारत रत्न आज ही वाज मेंबर ऑफ द अवार्ड कमिटी हु डिक्लाइंड कि डिक्लाइन करथिले भारत रत्न जे कि गोटे मेंबर ऑफ अवार्ड कमिटी किए मौलाना अबुल कलाम आजाद डिक्लाइन करथिले भारत रत्न को आज ही वाज ए मेंबर ऑफ अवार्ड कमिटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which institution assisted primary education program in Odisha in 1996-97? Which institution? World Bank. बुझला World Bank institution assist primary education program in Odisha in 96-97. Next question. Which one indicates universalization of
universalization of primary education. Which one indicates universalization of primary education? किए universalization करथिला primary education को? Indicates universalization of primary education. किए करथिला? Universal enrollment, universal retention, universal attainment. बुझला ये सब समस्त कौन करथिले? Indicates universalization of primary education. Okay. From which year NPEGEL National Program of Education for Girls at Elementary Level initiated at Odisha in the year 2003 बुझेला National Program of Education for Girls and elementary level initiated at Odisha in 2003. Which year midday meal program commenced in Odisha? Odisha रे केबे midday meal program commenced करा जायतिला केबे 1995 रे बुझला 1995 रे ओडिसा रे midday meal program commenced करा जायतिला. For environment education UNESCO organized a conference in the year environment education पई UNESCO केबे गोटे organize करथिला गोटे conference केबे organize करथिला in the year 1974. Okay, 1974 रे UNESCO organized a conference for environment education. Okay, next question. Which one below comes under value education? Value education एमान को भितर किए आछे social awareness and responsibility, fearlessness, dignity of manual labor, all of these बुझला all of these. Next question देखिबा. Who is known for his advocacy for basic education? Who is known for his advocacy for basic education? Yeah, Gandhi is known for his advocacy for basic education. 47. Which one is characteristics of learning? Which one is the characteristics of learning? What learning is an adjustment, learning, hearing of growth, learning with a purpose. सब गुड़ा का बुझला सब गुड़ा को गोटे characteristic of learning. Okay, next question देखिबा. Who below is known for his experiment on dog with regard to conditioned response theory of learning? Conditioned response theory of learning by किए dog ऊपर experiment करथिले किए करथिले पावलोव बुझला पावलोव dog ऊपर experiment करथिले for conditioned response theory of learning को नहीं कि बुझला on regard to conditioned response theory of learning. Okay, on whose theoretical application computer could be made? कहार theoretical application द्वारा computer made हेला कहार चार्ल्स बाबेज बुझला चार्ल्स बाबेज को theoretical application computer could be made. Okay, next question. In which year www World Wide Web was developed? World Wide Web को वर्ष develop हेतिला 1991 रे. Okay, 1991 रे World Wide Web develop हेतिला. Okay, next question देखिए. From which year email started working? Email को वर्ष रो starting हेतिला. Email टा हमरो 1971 रो start हेतिला. Okay, 1971 रो लोग email यूज करथले. Identify the wrong statement. Kota wrong. Education is acquisition of knowledge. Education is not a social science. Education causes transmission of culture. Education is a lifelong process. Kota wrong बोली पचारछि. Education is not a social science. Social science नो है केमती बुझला एटा ही हबो. Okay, education is not a social science. This is a wrong statement. Okay, educational acquisition of knowledge ठीक अछि आ सब भी ठीक अछि. Okay, next question देखिबा. Which one below is not a formal agency of education? एमान को भीतर formal agency of education कोडा न है. Religious institution. Religious institution is not a formal agency of education. Religious institutions
आर नॉट ए फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन शिक्षार फॉर्मल एजेंसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन गुड़ा केबे भी हो पारबेनी ओके which one below is not an informal agency education is not an informal agency of education कि गोटे इनफॉर्मल एजुकेशन नुहे बोली पचार से फैमिली मार्केट कम्युनिटी फिल्म 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 द्वारा आम बहुत किसी शिखिता बुझेगा फिल्म द्वारा आ गोटे कथा मन रखिए पे देख ये जो फिल्म दिखाई गोटे रहा आमर कौन गोटे रहा फिल्म आ गोटे रहा कौन मूवी ओके फिल्म आ मूवी भितर डिफरेन्स कौन फिल्मटा आम कौटा कहवा जहाँ को देखिकी आम कि शिखु मूवीटा आमर कौन क्या कहुए गोटे डॉक्यूमेंटरी गोटे विषय उपर कि गोटे जिनस जहाँ कि शिखा मिले ताको मूवी कहुए मूवी इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट फिल्म इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट फिल्म इज फॉर लर्निंग प्रोसेस बुझेगा ये कन्फ्यूज हेनी ओके देखो साइकोलॉजी इज अप्लाइड साइंस एजुकेशनल साइंस बिहेवियरल साइंस कौन हम ऑल ऑफ द अबव बुझेगा व्हिच बिहेवियरल साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स चाइल्ड डेवलपमेंट व्हिच बिहेवियरल साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स चाइल्ड डेवलपमेंट टुवर्ड्स रे किए कंट्रीब्यूट करथिले वाटसन ओके Watson behavioral scientist contributed towards child development. Okay, Watson behavioral scientist contributed towards child development. Which one is principle of school organization? Which one is the principle of school organization? School organization principle कोटा child centered, community centered, optimum use of available resource. Okay, all of these above बुझेला all of these are principle of school organization. Which one is a part of school organization? एमान के भीतर कोटा गोटे school organization in ओडिशा ओडिशार पार्ट कोटा SIET DPP SRC सब गुड़ाक बुझेला all of these are a part of school education in Odisha. Write the full name of VEC. VEC रो फुल फॉर्म कौन विलेज एजुकेशन कमिटी बुझेला विलेज एजुकेशन कमिटी VEC रो फुल फॉर्म होची विलेज एजुकेशन कमिटी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू एजुकेशन इज अवेलेबल इन ओडिशा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिंग टू एजुकेशन दैट इज अवेलेबल इन ओडिशा कोडा ऑल ऑफ देम ओपेपा SCIT DT बुझेला all of them are relating to education that is available in Odisha. Okay, which one is not related to curriculum development संगे कोटा related नुहे कोटा principle of child centered comprehensive utility market friendliness नुहे बुझेला करिकुलम ऑफ डेवलपमेंट मार्केट फ्रेंडलीनेस नुहे बुझेला व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू करिकुलम डेवलपमेंट एटार करिकुलम डेवलपमेंट होइनी. ओके व्हिच वन इज रिलेटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट व्हिच वन इज रिलेटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम डेवलपमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट कोड़ा ऑल ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी प्रिंसिपल ऑफ लीजर ऑल ऑफ दिस बुझेला ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
The development of education in Odisha is divided into which part? How many part? 2 part. Okay. Development of education in Odisha is divided into 2 parts. How many divisions are there in education in Odisha? How many divisions? There are 19 divisions. बुझला? There are 19 divisions are there in education in Odisha. 19 education. Okay. Next question. How many education districts are there in Odisha? Odisha रे केतेटा education district अछि? 75 टा. बुझला? 75 टा education district. How many education districts are there in Odisha? 75 education districts are there in Odisha. Okay. Curriculum is derived from curriculum टा हमर कोड आछि को वर्ड आछि Latin word बुझला Latin word curriculum is derived from Latin word. Okay. Identify the wrong pair. एमान को भीतर wrong pair किए पंडित रविशंकर भारत रत्न, अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज, भालेंटिना टेरिस्कोवा वोमेन एस्ट्रोनॉट, विनोबा भावे भूदान कोटा रिलेटेड नुहे एटा रिलेटेड नुहे. ओके. अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज नोबेल पीस प्राइज. ओके. एटा नुहे. दिस इज रॉन्ग पेयर. हु बिलो इज अवार्डेड एज भारत रत्न. एमान के भीतर किए भारत रत्न पाइछि? किए पीवी कने, अमर्त्य सेन, विधान चंद्र राय. बुझला सब ऑल ऑफ दीज आर अवार्डेड इन भारत रत्न. आइडेंटिफाई द ऑड वन. एमान के भीतर ऑड कोटा को बाहर करो. डीपीपी, ओपेपा, यूजीसी, एसएसए. कोटा एसएसए. बुझला ऑड वन कोटा ऑड वन होची एसएसए. सॉरी ऑड वन हमर किए ऑड वन टा हवा ये यूजीसी. बुझला यूजीसी टा हमर ऑड हवा. यूजीसी रा ऑड हवा. बुझला यूजीसी टा एटा यूनाइटेड रु आसना गोटा हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसटी पीपल लिव्स इन ओडिशा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसटी पीपल्स आर लिव इन ओडिशा. केते जण एसटी पीपल लिव करंदी ओडिशा रे? 62. बुझला 62 एसटी पीपल live in Odisha. 62 types of ST people live in Odisha. बुझला 62 type of ST people are live in Odisha. How many kinds of SC people lives in Odisha? SC people केते जण रहंती? 93. बुझला 62 93. बुझला 62 टा होची केते जण हमर ST people होचन 62 और SC people होचन 93. बुझला 93 टा हमर एससी पीपल 93 टाइप ऑफ एससी पीपल ओडिशा रे देखा जांती. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हाट द नंबर ऑफ टोटल लेजिस्लेटर इन ओडिशा. व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल लेजिस्लेटर इन ओडिशा? 147. बुझला टोटल लेजिस्लेटर इन ओडिशा इज 147. how many कौन दीजिए और कटी जाए. ओके. कौन क्वेश्चन देखिदबा. ओके. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम ओडिशा. हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा रे केते जण इलेक्टेड होंदी फ्रॉम ओडिशा. ओडिशा केते जण इलेक्टेड होंदी? केते जण 21 जण इलेक्टेड होंदी. बुझला 21 21 जण ओडिशा रो 21 जण इलेक्टेड होंदी. एटा कटि जाई छ बोधे.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी MPs represent in Rajya Sabha? How many MPs represent in Rajya Sabha? राज्यसभा केते जन एमपी रिप्रेजेंट थांती 10 जन बुझेला 10 जन एमपी राज्यसभा रे रिप्रेजेंट होगी थांती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ST/SC legislators are there in Odisha assembly how many SC/ST legislator are there in Odisha assembly रे केते जन legislator अछंती के जन 56 जन बुझेला ST/SC legislator are there in Odisha assembly रे 56 जन ST/SC legislator अछंती Deccan Queen runs between what Mumbai to Pune okay Deccan Queen runs between Mumbai to Pune भितर Deccan Queen run करजे बुझला POSCO is a registered steel company in South Korea बुझला POSCO is a registered steel company in South Korea okay NALCO project received support of which country France okay France NALCO project received support of France okay NALCO project received support of France Raulkela steel plant was assisted by German technocrats okay German technocrats द्वारा Raulkela steel plant assisted बुझला Raulkela steel plants was assisted by German technocrats okay who is called Utkal Kesari के HK महताब बुझला हरिकृष्ण महताब होचंदी उत्कल केशरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन who was not a union cabinet minister from Odisha union cabinet minister Odisha रो किए नुहे who was not a union cabinet minister from Odisha okay Dilip Roy was not a union cabinet minister from Odisha HK Mahta Biju Patnaik N Rautray are the union cabinet ministers from Odisha okay next question India acquired nuclear detonation power in the year India acquired nuclear detonation power in the year कोई year रे India acquire करतिला nuclear detonation power 1998 okay in the year 1998 India acquired nuclear detonation power okay next question Panchayat Raj Divas in Odisha is celebrated on Panchayat Raj Divas कोड़ा 5th March टा Panchayat Raj Divas बुझला 5th March is Panchayat Raj Divas को कहंदी Zakir Hussain was an कौन Dr. Zakir Hussain was an educationalist okay educationist okay Dr. Zakir Hussain was an educationist okay एट देखो ये वाज दीजिए बुझला इज देथिले म्यूजिशियन है तांदा okay next question who was the founder of सत्यवादी भारत रत्न विद्यालय who was the founder of सत्यवादी वन विद्यालय सॉरी भारत रत्न कुछ वन विद्यालय okay who was the founder of सत्यवादी वन विद्यालय के फाउंड करथिले गोपबंधु was the founder of सत्यवादी वन विद्यालय next question देखा in which year capital of Odisha was shifted from Katak to Bhubaneswar कोई ईयर रे कटक जो ओडिशा रो कैपिटल कटक रु भुवनेश्वर को करा जायतिला कोई ईयर रे 1948 बुझला 1948 रे
कटक को भुवनेश्वर को ट्रांसफर करा जायतिला बुझिला कैपिटल को हुएनसांग किए थिले वाज ए चाइनीज ट्रैवलर बुझिला हुएनसांग वाज ए चाइनीज ट्रैवलर टी सुनामी इज ए मतलब माने सुनामीटा ना टी सुनामी एटा हो छोड़ो टी सुनामी इज ए जापानीज नेम बुझिला टी सुनामी इज ए जापानीज नेम एटा सुनामीटा बुझिला सुनामीटा को टर्म जापानीज टर्म बुझिला सुनामी इज ए जापानीज टर्म हु डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड किए डिस्कवर करथिले न्यूजीलैंड किए डिस्कवर करथिले कैप्टेन कुक बुझिला कैप्टेन कुक वाज डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड वास्को डा गामा वाज ए फ्रेंच जर्मन पोर्तुगीज स्पेनिश किए थिले पोर्तुगीज थिले ना वास्को डा गामा जने पोर्तुगीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु वेर द फर्स्ट टू यूज पेपर को माने फास्ट यूज करथिले के चाइनीज माने बुझिला चाइनीज आर द फर्स्ट टू यूज पेपर बुझिला चाइनीज माने फर्स्ट पेपर यूज करथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा राधाकृष्ण कमिशन रिपोर्ट वाज गिवन इन राधाकृष्ण कमिशन रिपोर्ट केबे दिया जायतिला 1948 ओके 1948 रे राधाकृष्ण कमिशन रिपोर्ट दिया जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु वाज इंडियन फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसएसआर रो फर्स्ट एम्बेसडर इंडियन एम्बेसडर किए थिले VL पंडित ओके VL पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट एम्बेसडर टू USSR ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट दिल्ली in which year Asian Relations Conference was held at Delhi को वर्ष एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली रे हेतला को वर्ष 1947 in the year 1947 Asian Relation Conference was held at Delhi okay next question where is बांडुंग कोठी अछि इंडोनेशिया ओके इंडोनेशिया बुझिला बांडुंग इज एट इंडोनेशिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आइडेंटिफाई द ऑड वन बीजिंग टापी लिस्बन बैंकॉक ऑड कोटा मान भीतर लिस्बन ओके लिस्बन टा होची ऑड ओके हो एबे एतिकी थाओ नेक्स्ट क्लास रे आउ तो कंप्लीट करबा टिके ब्रेक नै जा आउ तो क्लास नेक्स्ट क्लास रे करबा बुझिला के क्लास मिस करबनी बुझिला समस्त कंप्लीटली क्लास करबो ओके जहाँ डाउट रोज के कमेंट रे पचारिबो बुझिला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो बुझिला ओके ओके थैंक यू फॉर द रिटर्निंग इन द क्लास ओके नेक्स्ट क्लास रे तो पुणी देखा ओके बाय।